I love journaling. Journaling is something we started doing as children. First, it was in the form of a diary, then it became a kind of habit. And I always advocate writing a journal. What is a journal? A journal is basically something you write down every day. It could be any form. It could be reflection of what you've done. It could be something new you've learned. It could be planning the day ahead. It could be even writing your recipes down, something you made and it came out very well. You write it in your journal. It could be a part of your journal. It is actually, if you when you look back at your journal, it becomes a kind of progress. When I pick up some of my journals, I realize that I used to make rasam in a particular way a long time back, and now the way I make it, the recipe has changed. This is a very, very mundane example of what journaling is about, because journaling is much more than writing your recipes down. The first thing I'd like to say is start writing one. Once you start writing it, you'll realize how important it is. So, the first step, get a book, an old diary, um, a writing pad, anything, and a pen, and keep it at a place which is accessible. Second step, set a time. You can either connect it to an activity or set a time for it. I find connecting it to an activity is more easy. For example, if you do it with your morning cup of tea, that comes automatically. Because if you set 8 o'clock, you might not be free at 8 o'clock and you might not pick up your journal at 8. But you will have your morning tea, and you normally do have your tea, your first tea or your second tea or coffee, whatever you take, which is a relaxed one. So connect it to a relaxed one. So as you're having your tea or coffee, pick up a pencil or a pen and pick up a book or diary, preferably which you feel like writing in, which looks pretty, which looks nice to the touch, which makes you feel good about yourself. In any case, if you don't have that, don't stop from starting it. Start. So you've said you've got a book or a diary or a journal. You've set a time. Now, the third thing is actually writing down. There are no rules for what you write, how you write. Some people write 3 pages. They are called the morning pages. A lot of people advocate writing morning pages, but I've tried to write them. I have seen people trying to write them. If it is 3 pages, it is quite a difficult task. हो सकता है कि आप शुरू करो और आप उसको ख़त्म ना करो, क्योंकि 3 pages काफ़ी हो जाते हैं. उसमें टाइम भी लगता है. Sometimes you have the time, sometimes you don't have the time. So 3 pages is not what you have to set for yourself. The fact that you sit down and write, and you will find your pattern. आप अगर उसको 1 हफ्ता 15 दिन भी, अगर 15 दिन भी आप कर लेते हैं, तो यू विल रियलाइज कि आपको कितना कंफर्टेबल लगता है, कितना लिखना कंफर्टेबल लगता है, और कितनी देर तक और किस चीज़ के बारे में. नाउ वी कम टू द फोर्थ स्टेप, व्हाट टू राइट अबाउट. इट कुड बी रिफ्लेक्शंस. अगर आप फिलोसफिकल टाइप है, अगर आप को आर्ग्यूमेंट डिस्कशंस पसंद है, तो आपने जो कुछ के बारे में सोच रहे हैं, राइट अबाउट दैट. इफ़ यू आर द काइंड हु लाइक्स टू, यू आर अ सीकर, यू लाइक टू लर्न, तो आपने जो कुछ भी नया सीखा उसको लिख दीजिए. चाहे वो कोई फैक्ट है, कोई स्टेटिस्टिक है, सम अबाउट सम रिलीजन है, कोई लीडर के बारे में है, न्यू वे ऑफ थिंकिंग है, वट एवर यू लर्नड. इवन इफ इट कुड बी टाइप्स ऑफ साड़ीज़. आपको किसी ने बताया कि ये टाइप की है, आप उसको लिख दीजिए. आप उसको जब लिखेंगे तो आपको पता लगेगा देयर इज़ अ सर्टेन पैटर्न. कुछ चीज़ों के बारे में आपको लिखना अच्छा लगता है, कुछ नहीं लिखना लगता. आई विल नॉट मेक द वीडियो टू लॉन्ग, बट आई वुड लाइक टू टेल यू द बेनिफिट. इसका बेनिफिट क्या है लिखने का? सबसे पहला बेनिफिट जो मुझे लगता है, यू गेट ग्राउंडेड. आप एक प्रेजेंट में आ जाते हैं. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, यू टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट. सेकेंडली, आपकी थॉट्स ऑर्गेनाइज हो जाती हैं. मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हुआ या कुछ हुआ, आप जब उसके बारे में लिखते हैं तो आप
सोचते हैं कि झगड़ा क्यों हुआ, एंड व्हाइल यू आर राइटिंग यू रियलाइज बात तो कुछ थी ही नहीं, एंड व्हाइल यू आर राइटिंग इट यू आर सॉल्विंग इट इन योर माइंड. इट मेक्स यू क्रिएटिव. आपकी क्रिएटिविटी जागती है. आजकल हमें लिखने की आदत नहीं है, तो कम से कम आप पेन पकड़ के लिखना शुरू करते. यू डोंट लूज द हैबिट ऑफ राइटिंग. कई बार पेन उठाते हैं, मुझे तो लगता है अगली जनरेशन में बच्चे लिखना ही भूल जाएंगे. दैट इज समथिंग दे विल नॉट नो. दैट इज एन आर्ट विच विल बी लॉस्ट. एज इट इज़ हम सब कुछ अपने फ़ोन में करते हैं. एंड इट हेल्प्स यू टू सेट गोल्स. और इससे भी बड़ी बात है, जब आप अपना जर्नल उठाते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 महीने के बाद भी उठाते हैं, तो आपने जो थॉट्स लिखी हैं वो आपके माइंड में फ्रेश हो जाती हैं. एंड यू सी हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग, व्हाट आर योर वेज ऑफ थिंकिंग, व्हाट आर द थिंग्स विच टच्ड यू. सो प्लीज़ डू स्टार्ट writing a journal. I will make another video in which we will cover the types of journals and how you can make it very interesting. And I'll share some pages from my own journal also. I hope all of you will start writing a journal. Here's to happy journaling.